of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, has alleged that the government is planning an enforcement directorate raid against him following his recent Chakravyuh speech in the parliament during the discussion on the union budget. The Congress MP has claimed that he will be waiting for the central probing agency with open arms, and he's even taken a dig at Prime Minister Modi and Union Home Minister Amit Shah. He has stated that he will in fact be waiting with open arms and that chai and biscuits are on him. Remember viewers, Rahul Gandhi has accused the NDA government of trapping people in a so-called Chakravyuh or whirlpool where everyone including BJP MPs, farmers, workers, labourers are trapped. This is what he said in his speech in the parliament. Rahul Gandhi had also gone on to slam the union budget, especially the taxes that have been levied, stating that the middle class has been betrayed and that the middle class has been stabbed in the back and the chest as well. These are of course his statements that had ignited a huge row. Meanwhile, my colleague Kanika Khatiyar joins us on the broadcast with more details. Kanika, over to you. देखिए, बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पे एक्स पे पोस्ट करते हुए इस बात का आरोप लगाया है कि ईडी जो है वो किसी भी वक्त राहुल गांधी को जांच के लिए बुला सकती है। हालांकि राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पे जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि नेता प्रतिपक्ष होने के बाद जब पहली स्पीच बजट को लेकर सदन के भीतर उन्होंने दी थी, चक्रव्यूह स्पीच, जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि सरकार जो है वो एक चक्रव्यूह बता रही है जिससे तमाम लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है, उस स्पीच का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने ये बड़ा एलिगेशन जो है वो लगाया है और सरकार को घेरने की कोशिश की है कि ईडी जो है अब उस बयान के बाद राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई भी कर सकती है। हालांकि अपने ट्विटर हैंडल पे राहुल गांधी ने ईडी को जो है मेंशन भी किया है और उसके अलावा ये भी कहा है कि वो खुले मन से ईडी का जो है स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी की ओर से ये बड़ा बयान जो है वो दिया गया है और सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो की गई है। बिकॉज अभी इस वक्त जो है सदन की कार्यवाही चल रही है, बजट सत्र जो है वो चल रहा है, तो जाहिर तौर पे अगर देखा जाए तो इस बयान के तमाम तरह के मायने जो है वो देखने को मिलेंगे और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते इस तरह के बयान अपने आप में बड़े बयान होते हैं और साफ तौर पे अब सरकार की ओर से भी इस बयान की जो है पुष्टि करवाई जाएगी। राहुल गांधी को बोला जाएगा कि सदन के भीतर वो आए, इस बात को प्रूव करे। लेकिन रात 2 बजे करीब जो है राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पे ये ट्वीट किया कि ईडी की कार्रवाई जो है वो उनके खिलाफ हो सकती है। जिस तरह से सदन के भीतर उन्होंने चक्रव्यूह वाला बयान दिया था उसको लेकर राहुल गांधी ने ईडी को अपने ट्विटर हैंडल पे मेंशन भी किया है ट्वीट पे और उन्होंने कहा है कि वो खुले मन से स्वागत कर रहे हैं, चाय बिस्किट ऑफर करेंगे। लेकिन अब देखिए सरकार की ओर से जो हमारे लोगों से बात हुई है वो उनका कहना है कि राहुल गांधी से मांग की जाएगी कि वो लोकसभा हाउस के अंदर आए, इस बात को प्रूव करे कि आखिरकार कौन वो व्यक्ति है जो इस तरह की इंफॉर्मेशन राहुल गांधी को दे रहे हैं और राहुल गांधी किस बिहाफ पे ये एलिगेशन जो है वो सरकार पे लगा रहे हैं। All right, Kanika, with that I'd like to thank you for joining us on the broadcast, explaining our viewers what exactly Rahul Gandhi is currently alleging. Also joining us on the broadcast this morning is Ms. Anila Singh, Bharatiya Janata Party spokesperson. Good morning, ma'am. Thank you for taking our time speaking with us on the broadcast. Rahul Gandhi has levelled some very serious allegations against the centre. This is of course in the aftermath of his speech in the parliament, claiming that the farmers and the labourers in the country are trapped in a Chakravyuh. He stated that apparently ED insiders have told him that a raid is being planned against him. What do you make of these statements? My round to all, and this is nothing more than attention-seeking tactic of Rahul Gandhi. It looks that he is addicted to get attention from the media. That is why he keeps on behaving and stating certain things which catches the eye, and then the things are being discussed on different platforms of the media. This is the sole thing. Openly, when he says that he has been informed by an insider that he will have an inquiry from the ED side, this is alarming, that a person sitting somewhere in government organizations, and according to Rahul Gandhi, he is leaking information to Mr. Rahul Gandhi. So what type of bribe Mr. Gandhi is giving to that officer? It is very important to know. I think Mr. Rahul Gandhi should be interrogated and interrogated thoroughly so that he can reveal how he bribed ED person to reveal or leak information.
which practically, ethically, he shouldn't have. Number one. Number two, I think whoever wrote his speech and he thinks that it was a great speech by mentioning Chakravyuh, by saying Shiv ki Barat and all those things. I think he just said it. He doesn't understand when he talks about Abhimanyu ka Chakravyuh. I think he should read Mahabharata, not once, twice, but many times. Perhaps then he will be able to understand. He talks about Bhagwan Shiv. I think he should understand what Shiv is. He might be a Shiv Bhakt. I do not deny that. I don't know which religion he follows, but he can have faith in Bhagwan Shiv, and that is good. But he must understand that what Shiv is all about. So comparing our gods in parliament is not good at all. Time and again you keep on humiliating Sanatan. This again has been done by him. So Mr. Rahul Gandhi, I think, should be interrogated properly by the agencies that how, why and on which terms he got this information. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.